Hey you guys, hello and welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to subscribe and hit that bell button. So it's Thursday today and I have not posted anything in a while, like last week maybe, because again I was going through my rough days. Oh my god, this month has been a month full of mental breakdown and my mental health is just not stable at the moment, but I'm trying to be happy. That's it. Okay, so I just gave myself a haircut at home and this is how it turned out. I really loved it, and I was trying to do a kind of Ashna Sulay look, and I will just insert pictures over here so you all can watch my haircut. Anyway, so it's like 10:30 right now and I don't even know why I'm vlogging this, but like I just wanted to. So tomorrow is going to be a fun day. Tomorrow we are going to go to BBQ Nation for lunch and I'm very excited for this. I'll be vlogging tomorrow and I just can't wait to show you guys everything. The next morning, I've reached my office now और मैंने सुबह breakfast नहीं किया है because BBQ Nation जाना है and आप लोगों को पता है मैं कितना खाती हूँ. अगर नहीं पता तो मैं बहुत थोड़ा सा खाती हूँ, तो मैं अभी से भूख पैदा कर रही हूँ. So yeah, let's wait till 1. हम लोग 1 बजे निकलने वाले हैं. So see you then. Finally out. अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 PM और we are on our way to barbecue and yeah, इसका भी और मेरा भी first time है. So we are very excited. Hi Varsha ma'am. Are you excited? Yeah. Let's go. Whoa. We are finally here. Varsha ma'am, how are you feeling? I'm feeling good. Hello. Cheesy Our starter is here. It is pani puri. So let's go. Let's start. Let's start. मला भरवणार आहे का? I can. So we just had pani puri and how was it? 1 star. 1 star. मतलब जैसे हम बाहर खाते हैं वैसा उतना अच्छा नहीं था. ओके टाइप. चटपटा आलू. So we are eating चटपटा आलू और ये भी ठीक ठाक ही है. Non-veg is yet to come. We are waiting for non-veg. We are having veg kebab. अभी हर मतलब सब कुछ हम लोग वेज ही खा रहे हैं. जिसका वेट कर रहे वो आ ही नहीं रहा है ना वर्षा मैम? So I love the veg kebab. It had cheese in it and it was delicious. उसको एक चटनी के साथ खाया जो कोकोनट की चटनी होती है. So yeah, this chutney. So it was tasty. It's made with curd. Okay. And I think it is coriander, green chili, some sugar. Okay. So our virgin burrito is here. Okay.
this chicken seekh kebab, this is chicken tandoori, and this is veg paneer. क्या बोला तूने? This is veg paneer. Veg paneer क्या होता है? पनीर टिक्का. नॉन वेज स्टार्टर आया तो भी मज़ा आया ना. We have chicken leg piece and chicken crispy over here. मुझे ये सबसे ज़्यादा यूनिक दिख रहा है एंड इसलिए मैं सबसे पहले ये ट्राई करने वाली हूँ. ऐसा एक फ्रूट का क्रीम है, इनसाइड इज टार्ट. डेजर्ट्स आर द बेस्ट ओवर हियर, है ना? डन विद द डेजर्ट नाउ. अभी हम मेन कोर्स खाने जा रहे हैं. पिछड़े हुए हैं हम लोग. वापस आ गए. सो सैड किधर बैठी थी भगवान जाने. चलो चलो मेन कोर्स के लिए प्लेट उठाओ. So we have chicken dum biryani, veg noodles, corn salad and raita over here for main course. आज मी तुम्हाला सर्वांचे आभार मानतो की मी आज सांगितलेलं पार्टी ठेवली आहे. आज या त्याप्रमाणे तुम्ही आलात, खूप चांगलं आहे. आणि तुम्ही दिलेले जे काय गिफ्ट्स आहेत ते सुद्धा मला खूप आवडले. आणि जरी मी इथनं रिटायरमेंट होत असेल तरी मी कंटिन्यू करत आहे. आणि कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही असालच. काही इश्यू असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, यू कॅन कॉल मी on any time, anyway. If there is no hurdles in between, I am there for you. I will be there for you in future. Okay, thank you. अभी हम फालूदा खाने जा रहे हैं. या तो चल रहे. ब्यूटीफुल एनीवे. You are amazing, just the way you are. We are finally out. हम लोग का खा पी के हो गया. प्रज्ञा, how was the experience? अच्छा था. देखो, स्टार्टर और डेजर्ट बेस्ट था. मेन कोर्स वॉज वाहियात.
we hated main course. आइसक्रीम भी ओके था. हाँ, और फालूदा अच्छा था. फालूदा, I tried mango फालूदा, it was good. मलाई भी अच्छा था. So overall अगर आप आ रहे हो तो पेट भर गया. बहुत ज़्यादा. स्टार्टर और डेजर्ट में पेट भरो. मेन कोर्स was मेन कोर्स लेना ही नहीं है. लोगे तो भी अगर ट्राई करने के लिए प्रसाद जैसा लेना थोड़ा थोड़ा. 2 hours later. So I'm going back home now. I just finished my work at office and it's 5:30 right now, and I'm going to go and get my bus. So yeah, it was a fun day. I really enjoyed this day and my first experience at BBQ Nation. So if you like this video, please don't forget to give it a big fat thumbs up. Don't forget to share and don't forget to subscribe and comment down below. So see you all soon. Until then, stay happy and spread love.